Today, I'll be discussing um, multi-dimensional arrays and one-dimensional and arrays and two-dimensional arrays, and then we'll also have some discussion regarding three-dimensional arrays, and we'll discuss them in the context of pointers. Though I'll be showing a piece of code that uh, would not be using pointers as well, but our main discussion point would be related to the pointers, the use of pointers and the nomenclature. Now, this topic that we'll be discussing today is not included midterm. And as soon as this topic actually ends, we'll end our today's discussion, and then maybe if there is some time, we can go over some of the stuff. Uh, Again, if you have any problems, you can always ask me towards the end of this session. Okay, so let me share the screen with you, and then we can discuss. Okay. Right, I hope you can see this. We have discussed about copy constructor last time, and just to recap what we discussed last time was that you can copy the contents of an object into another object by writing down a special type of a constructor which is called copy constructor. And for that, the method of writing down that copy constructor was also discussed. We also discussed that if you don't write the copy constructor, then what type of copy will take place. We have also discussed the two types of copy mechanisms. One is called the shallow copy, and the other one is called the deep copy. The shallow copy the shallow copy, the difference between the two was in shallow copy, um, the two objects point to the same memory location. And of course, we are talking in terms of the pointers here. And therefore, if you change one, the other one automatically gets changed. And this property is not sometimes desirable. You want to have a copy, but then you want to treat those two objects independently. And so in that case, you have to have a deep copy arrangement where both the objects have the same contents when you copy them, but then they are pointing to different memory locations. So that means that if the contents of one changes, it doesn't affect the contents of the other. And in order to do the copy, a deep copy, you have to write down. I mean, if you're dealing with pointers and dynamic memory allocation, then you have to write down a copy constructor for that. Okay. So if you you have to write down a copy constructor, and you have to explicitly call that copy constructor through a mechanism that we have already discussed last time. So when you are declaring an object, at the same time you can equate it, or you can assign it to another object. And if you do that, then as a result, the copy constructor would automatically be called. Or you can call it through a functional form that we discussed last time, similar to what we discussed in the operator overloading. So fundamentally, copy constructor is an overloaded assignment statement. So it's fundamentally doing this.
So the question here is that if you write down a copy constructor, even then can you have a shallow copy? The answer is yes, you can have that. So in that case, if you want to do that, you'll have to say do this thing without calling the copy constructor. और आपको copy constructor call करने के दो तरीके last time हमने discuss किए थे, and I said the simple assignment of one object to another object. I'll leave it for you as an exercise. तो I don't know कितने लोगों ने इसे try out किया. लेकिन if you are not using the copy constructor, then the assignment statement would primarily be a simple assignment statement. So वो जो equality operator या assignment operator आप use कर रहे हैं, वो assignment operator normal assignment operator की तरह काम करेगा. So I've actually shared all the code that I've been using during the lectures. LMS के ऊपर मैंने अभी कुछ देर पहले ये मैंने शेयर किए हैं, और उसमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी जो कोड है वो भी मैंने शेयर किया है, और बाकी भी कोड मैंने शेयर किए हैं. So I think you should go over those codes which I've been using in either in my coding videos or during the lectures. अच्छा, just a word of caution, and that is कि उसमें कुछ हो सकता है repetition हो और कुछ शायद incomplete code भी हो उसके अंदर. So अगर ऐसा होगा तो you just discard that, and I've the names that I've given to those codes are related to the topic. तो अगर this pointer के लिए अगर आपने code को देखना है तो this dot cpp या this example dot cpp होगा उसका नाम, और अगर overloading operator है तो overloading example dot cpp, इस तरह से उसके नाम रखे हुए so that you can understand those. Right. अच्छा, नो थ्रो और ये जो फाइक ने जो अभी कमेंट किया है उसका भी कोड उसमें है, तो आई थिंक उसको भी आप देख लें. हाँ, उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं, जैसे पॉइंट आउट किया गया है कि डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं, फॉर दोज इन्वायरमेंट्स यू माइट हैव टू चेंज द कोड लिटिल बिट. तो अगर आप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं तो यू माइट हैव टू लुक इनटू द सिंटेक्स ऑफ दैट. ठीक है, तो उसको आप उसको ज़रूर चेक करें. इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग, and then try a different ID and hopefully it would work. और कुछ cases के अंदर, और in case के you can't change that, then in that case you have to look at the syntax of that. There might be a minor change in the syntax, so वो syntax change आप ज़रूर करें. अच्छा, यहाँ पे उमर का क्वेश्चन ये है कि do struct pointers not work if they have not been initialized in the dynamic memory? I mean the question is not very clear, लेकिन dynamic memory के साथ या without dynamic memory pointers can work, उसमें कोई ऐसा issue नहीं है. Dynamic memory आपको पता ही है कि हम क्यों यूज़ करते हैं. जब आपने heap के ऊपर memory allocate करनी, तो if you are not using the dynamic memory, तो फिर अगर आप pointers यूज़ करते हैं तो आपके stack के ऊपर सारा डेटा पड़ा होगा. तो वर्किंग ऑफ द पॉइंटर्स में कोई फर्क नहीं आएगा मेरा ख्याल, चाहे वो स्ट्रक्चर. जी जी, गो अहेड. ये जो हमारी लैब थी उसमें हमारे पास ना सी इन का और सी आउट का जो सिंबल होता है ना, उसकी ओवरलोडिंग कराई थी बाय यूजिंग ऑफ द फ्रेंड वाला फंक्शन सिंटैक्स वाला. जी. सर वो आपने नहीं पढ़ाया हुआ सर, वो हमारे मिड में आएगा. अच्छा, ओवरलोडिंग ऑपरेटर जो है ना, अगर आप सीन सी आउट थ्रू अ स्पेशल लाइब्रेरी, जैसे उसमें आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं, या बाय स्टॉपिंग द आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी, उस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज शायद नहीं आएंगी. लेकिन इन लाइन विद what we have discussed in the class, you should expect. सर हमें तो वो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड किया ना, वो तो हो जाएगा. हाँ, वो तो हो जो जाएगा. इस तरह से अगर हम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं तो उसमें इफ इट इज ड्रास्टिकली डिफरेंट तो फिर ऑब्वियसली दैट विल नॉट कम. ठीक है, तो लैब के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं हैं, they'll बेसिकली नॉट बी कमिंग. और वो जो टोटल कोर्स है वो आई विल अपलोड इट आफ्टर टुडेज लेक्चर, वो मैं आपको बता दूंगा. तो यही. अच्छा तलाल, आई एम नॉट चेंजिंग द स्क्रीन एट प्रेजेंट. ठीक है, तो डोंट वरी. तो अभी सिर्फ बात चल रही है, तो अभी इट्स नॉट लाइक कि ये स्टैटिक. ठीक है, तो आई
जी जी I had a question कि जो हमें एक लैब आई थी, I just wanted to ask कि उसके अंदर कहा था कि स्ट्रिंग्स के लिए पॉइंटर्स यूज करने हैं, तो उसके अंदर डिड वी हैव टू डिक्लेयर डायनामिकली एक पॉइंटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, या फिर वो कैरेक्टर पॉइंटर यूज करके फिर वो स्ट्रिंग बनानी थी कैरेक्टर रिले की? I'm not exactly aware of that problem, लेकिन Fatma, so you're Fatma? Yes, sir. Okay, So so basically the I'll just ask the TAs to क्योंकि उसका मेरा ख्याल है कि कोई solution pointers यानी solution का कुछ scene भी उसमें होगा, तो I'll just ask them to give you the insight to that ताकि आपको उसका पता चल जाए कि वो कैसे करना, ठीक है? बिकॉज उसमें वो स्ट्रिंग पॉइंटर्स मैंने यूज किए थे, और उसके अंदर वो जैसे आई स्ट्रीम और आउट स्ट्रीम बिल्कुल सही चल रही थी, उसके अंदर बस ये था कि वो जब उनको ऐड करना था दो स्ट्रिंग्स को और मैं उनके स्ट्रिंग पॉइंटर्स यूज की थी तो वो तब नहीं हो रहे थे। तो वो स्ट्रिंग को आपने इंक्लूड किया था उसके अंदर, आई थिंक उसमें इंक्लूजन शायद करनी पड़ती है, तो आई डोंट नो वेदर दैट इंक्लूजन वाज डन और नॉट। जैसे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं इसी तरह से इंक्लूड स्ट्रिंग भी करते हैं, तो मे बी you can try out that, लेकिन I'll just क्योंकि that's very specific to that particular question, so I don't remember that at present, so I'll just direct it to the TAs, and probably one of the TAs will contact you and explain this, ठीक है? थैंक यू। So I'll just ask maybe one of them to actually come over. अच्छा जी, so that was a bit of a background. So जो course outline के हवाले से, I mean midterm के हवाले से I'll explicitly outline the course for that, और उसी तक हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। लैब के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी हटके हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है? एंड देयर आर क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू द टीएस के आइंदा कोई इस तरह की लैब ना बनाएं जिसमें हमने स्लाइड्स के अंदर जिसका जिक्र ना हो या टेक्स्ट बुक का रेफरेंस जिसमें ना दिया गया हो। So hopefully that won't happen again. Okay, coming to this discussion on multiple arrays or multi-dimensional arrays, so you already know single dimensional arrays. So 1D arrays का आपको आसानी से अंदाजा है, 2D arrays भी आपने most probably use की होंगी, लेकिन just to recap, primarily here you can see that there are multiple single arrays that are present here. A1 is let's say a label of the first single array, and it contains 3 elements. Then A2 is another single array that contains 3 elements again. A3, A4 are again the single arrays that are present here. So the single arrays mean here that you have, let's say, one dimensional array that you have. Okay, so 1D array. So इसको, I mean, you know the syntax of that कि किस तरीके से उसको आपने करना होता है. So you simply write the name of the array and then followed by such brackets, or in brackets के अंदर you actually identify the size. So that is primarily what this single array would mean. So here, because there are 3 elements, so you can actually write down 3. Okay, so if I want to combine two single arrays together, so let's say कि इन 2 arrays को मैंने combine करना है, तो इसमें number of rows जो मेरे पास आएंगी वो let's say वो 3 है, और number of arrays जो मैंने combine की हैं they are 2. Okay, so in 2D this combined array, I mean A1 and A2 दोनों arrays को if I combine them, I'll get a 2-dimensional array of size 3x2. ठीक है? So this is a 2-dimensional array of size 3x2, and similarly if I include A3 into this would be a 2-dimensional array of size 3x3, and similarly अगर A4 को मैं include कर देता हूँ तो this would be a 2-dimensional array of size 3x4. So multiple single dimensional arrays को I can combine them together to form a 2-dimensional array, और उसके लिए जो format use होता है वो ये है कि with this bracket that you have in which you declare a single array, you can write down, let's say, the size of the number of single arrays जो कि आप combine करना चाहते हैं. तो दो brackets and with the number inside would give you the dimensions of the number of rows and the number of columns. So number of rows are
these are the number of rows that you have got, and the number of columns are, these are the number of columns, where I'm actually just drawing the line. तो इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में आप देख सकते हैं. तो दिस इज प्राइमरली अ मैट्रिक्स. और अगर आपने लेट्स से 2 डायमेंशनल अरे करनी है, दैट मींस कि यू आर एक्चुअली डिक्लेयरिंग अ मैट्रिक्स. तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस नोटेशन. सो दैट इज प्रीटी सिंपल. आई मीन दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट thing. Okay, yes, the starting index would always be 0 0. So 1 जो यहाँ पे है, इसका जो starting index है, that is 0 0. ठीक है. So starting index, इसकी रो का starting index भी 0 है, और इसकी उसका सॉरी कॉलम का भी इंडेक्स जो है वो 0 है. तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे लेट्स से 3 और 4 शायद गलत हो जाएंगे, बिकॉज इंडेक्स एक्चुअली वेल दिस इज परफेक्टली फाइन. लेकिन जब आप इसको कॉल कर रहे हैं तो यू हैव टू कीप इन माइंड के 4 का मतलब जो है ना, दैट इज एक्चुअली 0 से ये स्टार्ट होगा. सो इफ यू वांट टू get the first row, so it would be 0 0 0 0 1 0 2 and 0 3, and this is how this would actually go, right? So you are right. So इस केस के अंदर यही होगा. So this would be primarily a matrix of size 3 by 4 with the index starting from let's say 0 to 2 3 के केस में, और from 0 to 3 4 के केस में. So you have to declare it accordingly. ठीक है. तो यहाँ पे 3 और 4 इस तरह से शायद आप उस तरह से नहीं करेंगे. अच्छा, so normal coding के अंदर you can very easily access the elements, और उसमें किया जा सकता है. लेकिन what about pointers? I mean, अगर मैं pointers को use करता हूँ, तो what is, how can I actually use pointers in this particular case? Okay, so and that's our point of discussion. ठीक है. तो what we can do is के right, so you can look at this array as I've just told you. It starts from the rows are represented by row 0, row 1 and row 3, which is equal to 3 rows that you have. The size is 3, and then you have the these are the indices of each element. Of course, this is a matrix form. So the final index of this would be 2 comma 3. That means that it's the third row and the fourth column, and this is representing the index of the number of columns that you have. Okay, the number of columns that you can have. So you can look at this 2D array either say a compilation of 4 vertical arrays, or 4 or 3 horizontal single arrays. ठीक है. तो what I'm saying is कि आप जो है वो either you can say that this representation is a combination of this single dimensional array, and this single dimensional array, and then the fourth single dimensional array. इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है. Or you can look at it from this perspective. You can say that okay, this is my one single dimensional array, this is another single dimensional array, and this is another single dimensional array. तो या कॉलम्स को आप सिंगल डायमेंशनल अरेज ले सकते हैं, या रोज को आप सिंगल डायमेंशनल अरेज ले सकते हैं. ना व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम इसको पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, सो दिस नोशन would become important. Okay, so how to access this? To access this array using the pointers, what you can do is that you can declare an array of pointers. ठीक है. So array of pointers आपको declare करना पड़ेगा. तो फर्ज करें कि this is let's say one array, this is another array, this is another, and this is another array. तो इनको एक्सेस करने के लिए what you can do is that you can actually define a pointer. तो आप ये कहें कि एक पॉइंटर मैंने डिफाइन किया जो कि इस array को एक्सेस करेगा, एक और पॉइंटर मैंने असाइन डिफाइन कर दिया जो कि सेकंड array को एक्सेस करेगा, एक और पॉइंटर है जो कि थर्ड को एक्सेस करेगा, और एक और पॉइंटर है जो कि फोर्थ array को एक्सेस करेगा. तो in this case, if I have to access a 2-dimensional array using pointers, I'll have to declare an array of pointers. So what is this? This can be seen as an array of pointers. Okay, so you will have first pointer, then you can have the second pointer, then you can have the third pointer. So here, let's say P1 is a pointer that points to the first column array. P2 is the pointer that points to the second column array. P3 is the pointer that points to the third
array, and P4 is the pointer that is pointing to the fourth array. ठीक है, and these P1 to P4 they are all pointers. ठीक है, so therefore in order to access this two-dimensional array you have to have a single dimensional array of pointers. So let's say अगर आपके पास 2D array है, so 2 minus 1 is the size of the array or is the dimension of the array pointers. तो अगर 2-dimensional array आपके पास है और आप pointers के through access करना चाहते हैं, so you will have to have 1-dimensional pointer array. ठीक है, अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास 3-dimensional array आ जाती है, 3-dimensional array इसका मतलब ये है कि आपके पास अब 2 dimension नहीं है बल्कि 3rd dimension भी है. ठीक है, so in that case let's say कि ये भी एक dimension है जिसके अंदर आपने pointers को access करना है. ठीक है, so you have another array here, एक array यहाँ पे है, एक इसके पीछे एक और array and so on and so forth. So this would be a 3-dimensional array जिसमें आपके पास coordinates आपके पास जो है ना वो 0, 0, 0, that would be the first coordinate. तो उस केस के अंदर आपको अगेन array of pointers डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन अब जो array of pointers आप डिफाइन करेंगे that would be a 2-dimensional array of pointers rather than 1-dimensional array of pointers. तो अगर 2D को access करना है तो 1-dimensional array of pointers define करने, अगर 3D array को आपने access करना है तो 2D arrays of pointers आपको initially define करने पड़ेंगे, and this actually goes on. और अच्छा, अब 2D arrays of pointers आपके पास आ गए, तो 2D arrays of pointers को भी तो आपने access किसी तरीके से करना है ना, तो it would be very similar to what the metrics that I have got. तो 2D को access करने के लिए आपको एक और 1-dimensional array, so all the way down to 1-dimensional array आपको जाना पड़ेगा. तो जितनी भी dimensions होंगी उतने ही आपके पास levels आ जाएंगे. तो single dimensional array के लिए एक pointer काफी है, you don't have to have an array here. लेकिन 2-dimensional array के लिए आपको 1-dimensional array आपको चाहिए, ठीक है, of pointers to access that. और अगर 3-dimension है तो आपके पास 2 arrays चाहिए आपको to access the pointers. एक array आपको 2-dimensional array चाहिए of pointers और एक आपको चाहिए 1-dimensional of array. ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. तो 3D के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले 2D के ऊपर बात कर लेंगे. तो here is the situation that we have got. So this is what these would look like. So you have to have an array of pointers. So A1 to A4 is the array of pointers that you have declared. लेकिन जो starting pointer है वो किधर है? कौन सा starting pointer कौन सा होगा? ठीक है, मैंने एक array of pointers define कर दी. वो कैसे करनी है I'll just show you in a while. उसकी कोडिंग भी अभी आप देखते हैं. Let's just have conceptually. तो starting pointer जो है, I mean you know कि array के लिए जब हम single dimensional array के लिए pointer इस्तेमाल करते हैं तो it points, you have a pointer that points to the first element of the array. ठीक है, तो यहाँ पे first element of the array जो है वो 1 1 है, उसको एक pointer point कर रहा है which is A1, right? लेकिन अब आपके पास एक pointer नहीं है, अब आपके पास जो है वो 4 pointers हैं. तो आप स्टार्ट किधर से करेंगे? A1 से करेंगे, A2 से करेंगे, या A3 या A4 से आप स्टार्ट करेंगे? ऑब्वियसली A1 से आप स्टार्ट करेंगे. तो A1 किधर है? क्योंकि यू आर एक्चुअली यूजिंग से न्यू और सम सॉर्ट ऑफ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो A1 जब आप A1 A2 A3 A4 जब एक अरे आप डिफाइन करेंगे तो इट वुड हैव सम मेमोरी एलोकेटेड. तो स्टार्टिंग पॉइंटर जो है वो किधर होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंटर शुड पॉइंट टू विच एलिमेंट? 0 0. जी 0 0 को तो A1 पॉइंट कर रहा है, तो यू आर सेइंग कि A1 स्टार्टिंग पॉइंटर है. यस सर. हाँ, लेकिन A1 किधर पड़ा हुआ है ये किसको पता है? A1 किधर है ये तो ये किसी को पता है? स्टैक में. क्योंकि आपने न्यू लेट्स से अगर आपने इस अरे पॉइंटर को अरे ऑफ पॉइंटर्स को भी आपने हीप के ऊपर डिक्लेयर कर दिया यूजिंग न्यू. ठीक है, क्योंकि ये डायनामिक एलोकेशन आप अगर यूज कर रहे हैं तो उस सूरत में
A1 की लोकेशन तो चेंज होती है, जैसे ही आप न्यू यूज करेंगे A1 की लोकेशन चेंज हो जाएगी। लेट्स से कोई नई आपने मैट्रिक्स डिफाइन की है तो A1 की लोकेशन चेंज हो जाएगी। सो व्हाट डू यू वांट हियर? व्हाट यू वांट हियर इज दैट यू वांट टू स्टार्ट विद अ सिंगल पॉइंटर, ताकि सिंगल पॉइंटर पॉइंट करे टू सम प्लेस, जहां से फिर आगे आप अपनी रीडिंग जो है वो शुरू कर दें या मैनिपुलेशन शुरू कर दें। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू ये 4 पॉइंटर्स तो हमारे हैं A1 A2 A3 A4. राइट राइट, We need another pointer. yes, you are absolutely right. So you will need another pointer which is the fifth pointer that would always point to the starting location. ठीक है, और starting location इस केस में क्या है? A1 is the starting location, क्योंकि A1 जो है वो 1 जो 0 को point कर रहा है initially. ठीक है, so we need another pointer here that points to A1, and this pointer जो कि A1 को point कर रहा होगा, this would give you the starting point कि आपने A1 से start करना है। अगर आपने A4 से start करना है, let's say कि other way around अगर आपने start करना है, तो this A pointer should point to A4. ठीक है, so now let me just recap. In order to access any multi-dimensional array के अंदर arrays of pointers चाहिए, और कितनी arrays of pointers चाहिए that depends कि आपकी जो कितने dimensional array है। अगर 3 dimensional array है, अगर let's say single dimensional array है तो single pointer से काम चल जाएगा। अगर आपके पास 2 dimensional array है तो 2 dimensional array के ऊपर on top of that you need to have a 1 dimensional pointer array। ठीक है जी, और 1 dimensional pointer array के ऊपर एक single pointer होगा जो कि आपके starting pointer को basically point कर रहा हो। So you have how many layers of pointers? Primarily 2 layers of pointers. एक आपके पास array pointers की layer है और एक single pointer है। That single pointer array would point to the initial pointer which is A1. ठीक है जी, तो अब यहाँ पे situation ये है कि you have a pointer pointing to another pointer. So A is also a pointer and A1 is also a pointer. So you have a pointer A that points to another pointer which is A1. Right? Okay, जी हमजा। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आप इसीलिए एक और पॉइंटर डिक्लेयर करें क्योंकि अगर हम हीप के ऊपर एक एरे ऑफ पॉइंटर, आप ये 2 मल्टी डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करते हैं सर, उसके बाद आप उसके बाद एक और एरे पॉइंटर ऑफ एरे डिक्लेयर करते हैं, तो जब भी आप न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे उसकी मेमोरी चेंज हो जाएगी हीप के अंदर। सो वी नीड टू लोकेट दैट। जी जी, यू नीड टू लोकेट द स्टार्टिंग पॉइंटर कि आपने स्टार्ट किस पॉइंटर से करना है, कौन सा ऐसा पॉइंटर है। तो बिकॉज इट्स डायनामिक देयरफॉर यू हैव टू हैव अ सिंगल पॉइंटर पॉइंटिंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑलवेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट वुड ऑलवेज बी पॉइंटेड बाय ए। ठीक है, सो होगा क्या, यहाँ पे ए पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर, सो दैट्स द डिफरेंस है। सो सिंगल अ पॉइंटर पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर। अच्छा, अगर 3 डायमेंशनल अरे हो और उसको आपने एक्सेस करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने के लिए आपको एक 2 डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंटर्स चाहिए, फिर 2 डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंटर्स को एक्सेस करने के लिए एक सिंगल पॉइंटर अरे चाहिए, और उस सिंगल पॉइंटर अरे को एक्सेस करने के लिए एक सिंगल पॉइंटर आपको चाहिए। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने के लिए 1 डायमेंशनल अरे चाहिए, और 1 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने के लिए एक सिंगल पॉइंटर चाहिए। तो 3 डायमेंशंस के अंदर pointer A would point to another pointer which is on 1 dimension, and that 1 dimensional pointer would point to another pointer. तो वहां पे आप 3 pointers एक दूसरे को एक को point कर रहे हैं। So 2 dimensional केस के अंदर, जो कि स्लाइड्स के ऊपर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 pointers हैं and 1 pointer points to another pointer. तो pointer is not pointing to the variable or to a data element, but हो ये रहा है कि यहाँ पे pointer is pointing to another pointer. So A is pointing to A1. तो अगर मेरे पास let's say 3 dimensional array आ जाए, तो I'll have this sort of an arrangement. So this would be the 3 dimensional array जो मेरे पास, let's say I'll again show you an example in this. तो एक मेरे पास ये 3 dimensional array है, इसको एक्सेस करने के लिए आपको एक 2 dimensional array चाहिए। ठीक है, ठीक है, so this would be the 2 dimensional array जो आपको चाहिए, ठीक है, in order to access this। ठीक है, और इस 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने के लिए
अगेन आपको एक सिंगल अरे चाहिए ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है, और इस सिंगल डायमेंशन ऑफ अरे को एक्सेस करने के लिए आपको एक सिंगल पॉइंटर चाहिए विच विल बी ए. So A in this case will be pointing to a pointer and then this pointer would again be pointing to another pointer. तो यहाँ पे 3 pointers हैं जो कि आपको चाहिए, and then the third one would be pointing to an element on this 3-dimensional array. So that makes things a bit more complicated. So that's why we'll just restrict ourselves initially to 2-dimensional arrays. ठीक है, सिर्फ 2-dimensional arrays तक initially हम restrict करेंगे, and we'll see the syntax. Though the manipulation of these pointers in multi-dimensional arrays is not very difficult. जी अली ने जो बात किया है, तो फॉर एन अरे ऑफ डायमेंशन n यू नीड n-1 पॉइंटर अरे. परफेक्टली फाइन. सो n-1 पॉइंटर अरे आपको मिल जाएगी. तो n-1 अरे को एक्सेस करने के लिए n-2 चाहिए, तो यू विल हैव टू गो ऑल द वे डाउन टू 1. ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो दैट वुड मीन कि आपको एक 4-डायमेंशनल अरे चाहिए, फिर एक 3-डायमेंशनल अरे चाहिए, फिर एक 2-डायमेंशनल अरे चाहिए, और फिर आपको एक 1-डायमेंशनल अरे चाहिए, और फिर फाइनली आपको एक सिंगल पॉइंटर चाहिए. सो यू विल हैव टू गो ऑल द वे डाउन टू 1 for arrays of n dimensions. और इस केस में हो क्या रहा होगा? हो ये रहा है कि a pointer points to another pointer and in turn it points to another pointer and in turn it points to another pointer. So pointers एक दूसरे को point कर रहे हैं. That is how this would actually work out. ठीक है, so this is little difficult. जी फातिमा, go ahead. सर मैंने पूछना था कि ये जो पॉइंटर्स हैं सारे, जैसे जब हमने न्यू और डिलीट किया था तो हमारा पॉइंटर जो था वो स्टैक पे था. जी. तो इस केस में हमारे पॉइंटर के जो अरेज होंगे वो भी स्टैक पे होंगे? नहीं, इस केस में हाँ, इस केस में अगर आप न्यू को यूज कर रहे हैं तो फिर वो हीप के ऊपर होंगे, और आपका जो सो वो हीप के ऊपर आपके पास जनरेट होंगे. लेकिन जो आपका इनिशियल पॉइंटर होगा जो कि सिंगल पॉइंटर है, दैट वुड बी ऑन उसकी मेमोरी एलोकेशन आपकी जो है वो स्टैक के ऊपर होगी. लेकिन देयर आर ways that you can also put it on stack. लेकिन let's keep it things simple. The simple answer to your question is कि जितनी मल्टी डायमेंशनल अरेज या सिंगल डायमेंशनल अरेज या 2-डायमेंशनल अरेज आपके पास होंगी, वो सारी की सारी if you are using this keyword new, तो वो हीप के ऊपर ही जनरेट हो रही होंगी. ठीक है. सर तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये हमारे हीप पे कैसे काम करते हैं? मतलब कि पॉइंटर्स तो सारे स्टैक पे नहीं होने चाहिए? नहीं, वो जनरेट उधर हो रहे होंगे, लेकिन दे विल एक्चुअली बी पॉइंटिंग टू अ लोकेशन ऑन द हीप. ठीक है, सो फाइनल लोकेशन जो आपके पास आ रही है ना, इट वुड बी पॉइंटिंग टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन ऑन दैट. ठीक है, तो A1 आपने जनरेट तो उधर किया है, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं, ठीक है ना, वो उसकी अपनी मेमोरी एलोकेशन तो उधर पड़ी होगी, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं और उसके अंदर जो मेमोरी पड़ी हुई है वो हीप की कोई मेमोरी एलोकेशन उसके अंदर होगी. ठीक है, तो इसलिए दिस होल प्रोसेस जो कि अभी मैंने आपको बताया, दिस होल प्रोसेस कैन बी डन और कैन बी initiated or written in a code through a single line of code. ठीक है, और सिंगल लाइन ऑफ कोड में जी I'll just be showing you an example in a while, जिससे ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. अच्छा, तो how would this happen? I mean this is same example that I've shown you of the 2-dimensional array. अगर जनरल फॉर्मेट आपका जो n-dimensional array का ये होगा कि you will have to put some size here, और ये size 1, size 2, and actually it will go up to size n. How to actually do it? ठीक है, this is a standard way of initializing the arrays. I mean you already know about that कि अगर आपने 3-4 आपने array size अगर आपने करना है, so you can have 3 rows here and 4 columns here, और उसको आप इस तरीके से initialize कर सकते हैं. How to get that value, that is also easier. And how to access this. So far we haven't really done anything miraculous here. We haven't used any pointers here. Here is the example that is for a single dimensional array. So I'll start with single. So single dimensional array के अंदर आपने ये देखा कि this is how you actually do, and you remember this कि ये कैसे करते हैं.
ठीक है. So you have a single dimensional array of size n, and you are using this new keyword dynamically allocating memory, and you are initializing it with the help of a pointer. So this is for a single dimensional array. ठीक है. और क्योंकि आपने न्यू के थ्रू किया है तो आपने ये जो उस पॉइंटर को जो है ना, आपने ऑब्वियसली उस मेमोरी एलोकेशन को आपने डिलीट भी करना है, तो यू कैन डी एलोकेट द मेमोरी. अच्छा, व्हाट वुड हैपन इन केस ऑफ अ टू डायमेंशनल अरे? जब टू डायमेंशनल अरे चाहिए तो आपने सिंगल पॉइंटर तो जनरेट नहीं करना. आपने बेसिकली क्या करना है, आपने सिंगल पॉइंटर को जनरेट करना है दैट पॉइंट्स टू अ वन डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंटर्स. ठीक है. तो उसके लिए द फॉर्मेट I've just told you that this is what is happening here. The format for this would be कि अगर आपने array of pointers generate करने हैं, यानी single pointers array करने हैं, तो int static और फिर pointer का नाम, and then you can initialize that. Fine. So you can have int static. लेकिन अगर pointer to pointer अगर आपने generate करना है, तो in that case you have to have int double star. So double star would mean कि you are actually generating a pointer that points to a pointer array. ठीक है. तो int double star, this notation is actually generating a pointer that points to a one dimensional array, right? So one dimensional array को ये point कर रहा है. So pointer array को ये point कर रहा है. So इसका format is quite simple. You just add another static there. So int static. This would mean that now I don't want a single pointer to be generated. What I want is that I want a single pointer that points to another array of pointers, or pointer array को वो point कर रहे हो. So in that case, I'll actually be using int static. Okay. So this is the standard format for generating a pointer to a pointer. ठीक है. तो double pointer वाली बात आ गई. तो int static ptr is that ptr points. It does not point to a variable. Now ptr points to another pointer. ठीक है. So p2 जो इस केस में है, p2 points to p1 and p1 is also a pointer. ठीक है. And so on and so forth. तो इसमें let's say कि अगर मैंने 3 जनरेट करने हैं, लेट्स से मैंने एक पॉइंटर जनरेट करना है जो कि एक और पॉइंटर को पॉइंट कर रहा हो, और फिर वो जो पॉइंटर है वो आगे किसी और पॉइंटर को जो है वो पॉइंट कर रहा हो. So instead of having two statics, I'll have 3 statics there. So int static ptr. So that means कि I'm actually talking about that single pointer जो कि एक और पॉइंटर को और फिर in turn वो एक और पॉइंटर को जनरेट कर. So I'll have 3 pointers. So अगर 3 statics हैं तो that basically 3 pointer pointing to another pointer will be generated. और अगर single static है तो that points to a simple memory location. वो किसी पॉइंट को किसी पॉइंटर को पॉइंट नहीं कर रहा होता. और अगर 2 statics अगर आप यूज कर रहे हैं int static, then that would mean कि ptr is pointing to another pointer. ठीक है. Okay. So this is the standard format for this. So in order to generate a pointer pointing to another pointer array, I'll actually be or another pointer that would mean that I'll have to use this int static array 2D. So this is array 2D is the name of the pointer. So arr2d points to another pointer which is ar2d 0 in this case. ठीक है. तो इस केस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस के अंदर मुझे ये करना पड़ेगा कि तमाम सिंगल डायमेंशनल अरेज दे आर बीइंग पॉइंटेड बाय एन पॉइंटर अरे, और फिर उस पॉइंटर अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंटर है उसके लिए मुझे एक अलग से पॉइंटर जनरेट करना पड़ेगा विच इज इंट स्टैटिक. ठीक है. तो इंट स्टैटिक से जो पॉइंटर जनरेट करेंगे वो ये बता रहा है कंपाइलर को, सिस्टम को, कि अब तुमने किसी वैल्यू को या किसी खास मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना है, और वो मेमोरी लोकेशन एक्चुअली किस उसमें क्या चीज़ है, उसमें एक और पॉइंटर पड़ा. ठीक है जी. रेगुलर पॉइंटर्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है. यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर रेगुलर पॉइंटर्स. अगर पॉइंटर को पॉइंटर एक और पॉइंटर से अगर आपने करना है तो दिस इज परफेक्टली फाइन टू यूज इट इन स्टैटिक. तो right, so here is an example.
I'll just go through this example and then I'll also show you. Then I'll just show you कि कैसे जो है वो ये कोड काम करेगा. So primarily here you have a function. This is the function here, show. This show function is primarily printing out the contents of the two-dimensional array. ठीक है, two-dimensional array के contents को वो print कर रहा है और इसके arguments क्या हैं? Size of the two-dimensional array x and y and a double pointer. I will call it a double pointer or pointer to pointer array. ठीक है, आसानी के लिए हम उसको double pointer का नाम दे देते हैं. ठीक है, so double pointer, it's actually a pointer to a pointer. So it's not pointing to a value or a particular variable, it's pointing to another pointer. So ARR जो है ना, it's actually a double pointer. तो वो आपको why? Because we need to know the starting location. और starting location जो first pointer की location पड़ी हुई है वो ARR के अंदर पड़ी हुई है. So that's why we need to pass this. And then this is a standard code जिसमें आपने value को print out करना है. So you have two for loops here. एक आपका x के लिए हो जाएगा और एक आपका y के लिए हो जाएगा. This is pretty standard. So ये आपको print कर रहा है. Okay, so on the other side, this is what will happen in the main program. So you have the main program, you declare or get the values of the size of the 2D arrays. N is the number of rows, let's say, or M जो है वो number of columns हैं. Then the first thing would be कि आपने two-dimensional pointer to the 2D array of pointers जो है वो आपने declare करना है. And this is how you can actually do it. Int static A, new int static N. ठीक है, so this is primarily a declaration of a double pointer A that points to an array of pointers. ठीक है, int static, it's very clear from the syntax also कि यहाँ पे भी int static n आपने किया. So you are actually generating an array of an array that contains pointers here. और उस array of pointers को क्या चीज और क्या कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है? That pointer is primarily being defined here. ठीक है जी. Okay, so this is the pointer to the 2D. Then we have the pointer initialization here. And that means कि यहाँ पे कितने pointers आपने primarily कितनी उसके अंदर आपने उसको पॉइंट करना है, कितने आपको पॉइंटर इनिशियलाइजेशन आपको कितनी चाहिए. ऑफ कोर्स आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दोज नंबर ऑफ कॉलम्स वुड गो हियर कि आपने इतने आपने पॉइंटर्स उसके अंदर जो है वो उनको इनिशियलाइज करना विद सम value. Say initialization of those pointers would take place. I'll just show you this code also in the coding environment and you will see that what happens here. और यहाँ पे आप input कर रहे हैं of the array that you are entering, उसमें आप populate कर रहे हैं अपनी matrix को. ठीक है, matrix को आप populate कर रहे हैं, उसके अंदर values आप डाल रहे हैं, and then you are calling this function show to actually print this matrix. और as it's clear from the function call कि सबसे पहले आपने double pointer आपने pass करना है which is a, फिर size of the number of rows, कितनी rows आपने उसके अंदर ऐड करनी और कितने number of columns आपने उसके अंदर ऐड करनी. ठीक है जी. तो वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से इसको आपने करना. Okay, so let's just see this how it actually works. I'll just show you the code for this implemented. Right. Okay. Yeah, there it is. Okay, so this is this
शो फंक्शन। रिमेंबर यहाँ पे हमने कोई क्लास को यूज नहीं किया, सिंपली शोइंग a two-dimensional array code. तो ये वो फंक्शन है शो दैट एक्चुअली prints the contents of that array, and of course you need to know the starting location. इसलिए आपने डबल पॉइंटर इसके अंदर जो आपने किया है उसके सिंगल पॉइंटर की मेमोरी लोकेशन कहाँ पे वो पड़ा हुआ है उसमें मेमोरी आपने उसमें मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट पॉइंटर जो है वो पास ऑन की है ताकि कहाँ से आपने शुरू करना है. एंड देन कम्स द मेन प्रोग्राम. Here you define the size of the dimensions. So let's say कि यहाँ पे मैंने 2 किया हुआ है, so let's just make it 4. यहाँ पे आप pointer to the 2D array using the double static आप कर रहे हैं. Then this is the part जिसमें आप 2D array को generate कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पे आप बेसिकली कंटेंट्स उसके उठा रहे हैं टू डायमेंशनल अरे के, ठीक है. सीन यहाँ पे काम नहीं करेगा बिकॉज आई एम यूजिंग द ऑनलाइन कंपाइलर, तो इस वजह से सीन यहाँ पे काम नहीं करेगा. तो द आंसर्स दैट यू विल बी गेटिंग वुड बी ऑल zeros here, so we will not be able to enter the answers, I mean the elements here. So ये scene will probably not work here. So if I execute this program, this is what you will get. So you get a matrix of 4 by 4. ठीक है जी. So these are this is primarily what is happening in this particular case. So you can see the steps that you have followed here. एक pointer to pointer आपने generate करना है, ठीक है जी. और फिर आपने primarily pointer array define करनी है, ठीक है. और फिर आपने उसको यूज करना है. The important thing that you have to keep here in mind is that the symbol that you are using, or the label that you are using for the array itself, for the pointers and for the double pointer, it's A. ठीक है, क्योंकि आप अलग से मैट्रिक्स उस तरह से डिफाइन नहीं कर रहे. Primarily what you are doing is कि you are actually at every instance you are pointing to a different memory location, ठीक है. तो इसलिए A के अंदर आपने वो प्रोविजन आपने ये रखी हुई है कि कैसे आपने उसको आपने मैनिपुलेट करना है. So that's why this thing has to be kept in mind, so that you know कि ये डबल पॉइंटर किस पॉइंटर को कर रहा है. तो A डबल पॉइंटर जो है वो that would always be pointing to one dimensional array of A pointers again. Right. So I hope this is clear. और ये मैंने कोड भी शेयर कर लिया, तो you can actually go probably ये वाला कोड मैंने भी शेयर नहीं किया, but I'll also share that. So you can play around with this code and see के कैसे आपने इसको देखना है. So there are few things that I'll leave up to you to actually explore. If you will explore this code, you will come to know कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, और कैसे आप इसको कर रहे हैं. So there are certain questions, and I'll be doing these questions for you. एक question, the first question. I mean, you can note down these questions. Maybe in some future, in future, you might have to like answer some of these questions. The first question is कि जब pointer to 2D array मैंने define किया, तो यहाँ पे मैंने initialize जब उसको कर रहा हूँ या उसको मैं declare कर रहा हूँ और initialize कर रहा हूँ, I'm using n here within the brackets, ठीक है. और जब मैं one dimensional array of pointers को define कर रहा हूँ, तो I am using m here, ठीक है. So यहाँ पे n क्यों use किया जा रहा है, ठीक है. So you have to keep this thing in mind, ठीक है. ये चीज़ आपने ज़हन में ज़रूर रखनी है कि ये क्यों ऐसा क्यों, ठीक है. And if you are able to get the answer to this,
then that would mean that you have actually understood it completely. Okay, so I'll leave this as a question for you before I actually move on. Okay, so other than this question, is there any other question you can ask me before we move on? जी फातिमा, आपने लिखा the single pointer points to each row pointer. Okay. Right. So you can just try to draw a diagram of this, and probably that would help you in understanding ये क्या होगा. अच्छा, फाइक आप कौन से लूप की बात कर रहे हैं? Could you please go down to the loop again? किस लूप की बात? पॉइंटर इनिशियलाइजेशन वाला. अच्छा, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, ये वाला. यस सर. अच्छा, इसमें लूप के अंदर कंडीशन तो i लेस देन m की डाली हुई है, लेकिन वो न्यू इंट m का किया हुआ है. ये क्यों हमने फाइक यूज किया? As I told you कि आप इसको थोड़ा सा just try to work this out, go through this code, ठीक है, and try to find out कि ये कैसे हो रहा है, क्या इसमें कोई गलती है या there is a logic behind this. ठीक है, that is precisely my question जो मैंने अभी आपके लिए have just left this question for you. ठीक है, figure out कि आप जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. ठीक है जी. ओके, एनीथिंग एल्स? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर हम जैसे अभी हमने n किया हुआ है तो दैट इज बेसिकली रिफरिंग टू नंबर ऑफ रोज. आपने कहा था शुरू में जब 2D आपने ड्रॉ किया था कि या तो हम एक पॉइंटर अरे यूं बना सकते हैं कि हर कॉलम को एक पॉइंटर पॉइंट करो, या फिर यूं बना सकते हैं कि हर रो को एक पॉइंटर पॉइंट करो. इस केस में हमने यूं बनाए हैं एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड कि हर रो को एक पॉइंटर पॉइंट करे. तो अगर हमने हर कॉलम को एक पॉइंटर पॉइंट कराना हो तो वो किस तरह करेंगे? आप डायमेंशन चेंज कर देंगे, बस सिंपल सी बात. ठीक है, किस तरह जो आप यहाँ पे कर रहे हैं उसका उलट कर देंगे उस केस में. ठीक है, n और m का ही फर्क है ना. तो अगर मुझे m न्यू पॉइंटर्स चाहिए और उसकी जगह अब मुझे n न्यू पॉइंटर्स अगर चाहिए होंगे तो मैं m की जगह n कर दूँ. लेकिन सर उससे ये नहीं होगा कि नंबर ऑफ रोज वो पॉइंट रोज को ही करेगा, लेकिन नंबर ऑफ रोज चेंज होकर नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज होकर नंबर ऑफ रोज हो जाएगा. प्राइमरीली वही चीज होगी, यानी यहाँ पे भी आप उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो it's almost the same thing. What you can look at it in two ways. Either you rotate the matrix itself, ठीक है, and view it that way. So it's basically the matter of viewing the matrix. ठीक है, तो अगर आप कॉलम वेक्टर करना चाहते हैं तो आप कॉलम की डायमेंशन ऐड कर देंगे, और जो डबल पॉइंटर आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें उसकी डायमेंशंस को भी आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वन जी सॉरी गो अहेड. टेक्निकली वो पॉइंटर्स जो होंगे वो रोज को ही पॉइंट करेंगे, हमने बस उसको रोटेट कर देना है मैट्रिक्स को. बिल्कुल ऐसे ही. I mean that's primarily the way you can look at it. ठीक है, so I mean let's not confuse ourselves by doing this. So you can fix it. I mean you can always say कि जी अच्छा मैंने इसी तरीके से करना है. That's perfectly fine, क्योंकि उसमें आपने contents को retrieve करना है और उनके ऊपर कुछ process करना है. It really doesn't matter कि आप उसको रो कहें या कॉलम कहें, या उसको आप रोज और कॉलम्स की फॉर्म में देखें या उसको ट्रांसपोज करके देख लें. So it really doesn't matter, क्योंकि at the end of the day if you are interested in the content at a particular location, as long as the contents are being retrieved and being processed correctly, it really doesn't matter कि आप उसको कैसे व्यू कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा जी. हसन का क्वेश्चन, दिस इज प्राइमरली रिप्रेजेंटिंग जी A1 A2 A3 A4. जी बिल्कुल ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं ना पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, ये उस वन डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है जी. सो I'll upload this piece of code also. So
thoroughly go through it, and hopefully you will understand. And if you have understood this, then I think there won't be any problem understanding the three-dimensional part here. So अच्छा, यहाँ पे अब जो मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, this is without using the pointers. I mean without using an array of the sort जो कि हमने पिछले उसमें देखा था. तो without using an array of pointers भी आप मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन अगेन अपलोड दिस. यहाँ पे आप, इफ यू लुक एट दिस लाइन इन दिस कोड, यहाँ पे यू आर ओनली यूजिंग अ सिंगल पॉइंटर. तो सिंगल पॉइंटर के थ्रू आप जो है ना टू डायमेंशनल अरे को एक्सेस कर रहे हैं. डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपने कि वन डायमेंशनल अरे ऑफ पॉइंटर्स नहीं बनाई, यहाँ पे आपने एक पूरा मेमोरी ब्लॉक ले लिया m×n, और इस m×n मेमोरी ब्लॉक को आप पूरे के पूरे मेमोरी ब्लॉक को आप एक्सेस कर रहे हैं थ्रू अ सिंगल पॉइंटर. एंड ऑफ कोर्स m×n मेमोरी ब्लॉक को जब आप एक्सेस करेंगे तो ये जो सिंगल पॉइंटर ए है, दैट वुड ऑलवेज पॉइंट टू द फर्स्ट लोकेशन ऑफ दैट मेमोरी ब्लॉक. ठीक है, तो सिंगल पॉइंटर के थ्रू भी ये काम हो सकता है, और पॉइंटर अरे पॉइंटर्स या पॉइंटर अरे के थ्रू भी ये काम हो सकता है. तो जो प्रीवियस कोड दैट आई हैव जस्ट शोन यू, दैट इज विद द पॉइंटर अरे. ठीक है जी. दिस वन आई जस्ट शो इट अगेन जी. दिस वन, यहाँ पे आप पॉइंटर अरे यूज कर रहे हैं इस piece of code के अंदर. So you can see कि double pointer is being used, or you can use a single pointer. ठीक है. The important thing here would be कि आपने एक्सेस करने के लिए या उनको लेट्स से पॉपुलेट करने के लिए टू डायमेंशनल अरे को, you will have to use an arrangement of something of this sort. ठीक है. Again, it's not very difficult to understand कि यहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है. And how you are incrementing your pointer here, और किस तरह से आप उसको पॉपुलेट कर रहे हैं और फिर आप उसको प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है. The same thing is happening here. जब आप प्रिंट कर रहे हैं, so you are incrementing it row wise and column wise. So single array के साथ भी पॉसिबल है, सॉरी सिंगल पॉइंटर के साथ भी पॉसिबल है. जी जी बिल्कुल ठीक है. लेकिन obviously this is one way of doing it. राइट. सो ऑफ कोर्स इसमें बहुत बड़ी आपके पास एक अरे बन जाएगी, वन डायमेंशनल अरे. दैट इज फाइन. अच्छा जी, तो लेट्स आई मीन लेट्स जस्ट मूव बैक टू द स्लाइड्स. और यहाँ पे so I've already shown you this. I'll leave it to you. Three dimensional array के अंदर क्या होगा? I mean, I'll just give you the concept, and then the code of that I'll just show you here, and then you can also like view this three dimensional array में. This is the sort of thing that would happen. You will have to go all the way down to a triple pointer situation, जहाँ पे आपके पास एक पॉइंटर एक और पॉइंटर अरे को पॉइंट कर रहा है, और फिर वो पॉइंटर अरे जो है वो एक और पॉइंटर अरे को पॉइंट कर रही है. ठीक है. सो यू हैव अ सिंगल पॉइंटर हियर दैट पॉइंट्स टू अ डबल पॉइंटर, और ये डबल पॉइंटर ऑब्वियसली पॉइंट्स टू अ सिंगल पॉइंटर. ठीक है. सो अब इस तरह से आपको जो है ये अरे डिफाइन करनी पड़ेगी. हाउ कैन यू डू इट? यू कैन डू इट यूजिंग थ्री स्टैटिक्स. ठीक है. तो एक ट्रिपल पॉइंटर, सो पॉइंटर पॉइंट्स टू अनदर पॉइंटर एंड देन टू अनदर पॉइंटर. ठीक. So this is what the three-dimensional array would look like. Again, I'll just show you the code here. So you can see यहाँ पे what is happening here. A triple pointer here is pointing to a double pointer. ठीक है जी. और फिर आप उस डबल पॉइंटर को ऑब्वियसली यू आर पुटिंग सम वैल्यूज इन इट, और फिर आप उसके बाद उस डबल पॉइंटर को टू डायमेंशनल पॉइंटर के अंदर आप उसको पॉपुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली डू इट. और उसको करने के लिए, क्योंकि दिस पॉइंट्स टू अ 2D अरे,
ये this points to a 2D dimension, so उसको आपको डबल फॉर लूप के साथ जो है उसको करना पड़ेगा. You can access the elements of that array, ठीक है, and then you can deallocate the memory also. और डीएलोकेशन के लिए भी आपको, क्योंकि आपने मल्टीपल अरेज डिफाइन की हुई हैं, तो डिलीट आपने फिर मल्टीपल अरेज को भी आपने करना है. 2 डायमेंशनल पॉइंटर अरे जो आपने डिफाइन किया उसको भी डिलीट करें, सिंगल डायमेंशन को भी डिलीट करें, 3 डायमेंशन को भी डिलीट करें. दिस इज हाउ यू कैन डीएलोकेट. I'll see if I have I'll just show you that what is the outcome of this. Yes, okay, I'll just show you the outcome of this. And with this, we'll end our discussion. Okay, so I'll just run this. Let's say that I've said कि जी मेरे पास भी x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 3 हो जाए और z की वैल्यू मेरे पास let's say 4 हो जाए. तो let me just, so this is exactly the same code जो कि मैंने अभी आपको दिखाया. And this is for 3 dimension. If you execute this, this is what you'll get, right? So you have got 2 matrices of size 3 by 4. So 2 matrices of size 3 by 4, right? And here we are using a, well, for simplicity, let's call it a triple pointer, or a pointer that points to a 2-dimensional array, and then that 2-dimensional array, single pointer array, and then and then that points to a 2-dimensional array. Okay. So this is how this would actually work. So my advice would be that rather than going directly onto the 3-dimensional arrays, आप 2-dimensional arrays को पहले thoroughly understand करें and then try to code the 3-dimensional arrays yourself. ठीक है, though I'll be sharing this code with you, लेकिन just for your own understanding इसको खुद कोड करने की कोशिश करें और देखें कि ये कैसे कोड होगा. Right, so this